आज हम लोग रोज़ की तरह भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। देखते हैं आज भगवद गीता से हमारे लिए कौन सी गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी। आज हमारे पास चैप्टर 10 द ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 8 आ रहा है। अहम सर्वस्या प्रभवो मत्ता सर्वां प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भवा समन्विता। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. तो भगवान बोल रहे हैं कि वो सारे स्पिरिचुअल और मटेरियल चीज़ों की उत्पत्ति है। ठीक है, वो मतलब हर एक स्पिरिचुअल चीज़ या जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, वो उनसे ही जनरेट कर रही है। सब कुछ उनसे ही मतलब दुनिया में आई हुई है। द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस, जो वाइज लोग हैं, जो जिसके अंदर विजडम है, वो जो इसके बारे में जानते हैं, नो दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस, वो उनके डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं। एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स, वो अपने पूरे दिल से वर्शिप करते हैं। ठीक है, भगवान को, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान ही सर्वस्व है। A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya, and who knows how to apply these teachings, can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual worlds. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. He can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by the fools. All Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva, and all other demigods. In the Atharva Veda, it is said, Yo Brahman Vidadhati Purvam Yo Vai Vedams Cha Gapalyati Sma Krishna. It was Krishna who is the beginning, instructed Brahma in Vedic knowledge, and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again, the Narayana Upanishad says, Atha Puruso Ha Vai Narayano Kamanyata Praja Shrejayati. Then the Supreme Personality, Narayana, desired to create living entities. The Upanishad continues, Narayanad Brahma Jayate, Narayanad Prajapati Prajayate, Narayanad Indro Jayate, Narayanad Asatau Vasavo Jayante, Narayanad Ekadasa Rudra Jayante, Narayanad Dvadasadita Yah. From Narayana, Brahma is born. From Narayana, the patriarchs are born. From Narayana, Indra was born. 8 Vasus were born. 11 Rudras were born. 12 Adityas were born. This Narayana is an expansion of Krishna. It is said, the same Vedas, Brahmaniyo Devaki Putra, the son of Devaki, Krishna, is the Supreme Personality. Narayana Upanishad 4. Then it is said, Iko Vai Narayana Asin na Brahma na Isano na Po na Gini Samo Neme Dvav Aprithivi na Naksatrani na Surya. In the beginning of the creation, there was only the Supreme Personality Narayana. There was no Brahma, Shiva, water or fire or moon or stars in the sky, or no sun. In the Maha Upanishad, it is also said that Lord Shiva was born from the forehead of Supreme Lord. Thus, the Vedas say that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. In the Moksha Dharma, Krishna also says, Prajapatim charudram chapi aham eva shrijami vaitau hi mamana vijanito mama mai vimohitau. The patriarchs, Shiva and others are created by me, though they do not know that they are created by me, because they are deluded by my illusionary energy. In the Varaha Purana, it is also said, Narayana Paro Devas Tasmaj Jatas Chaturmukha Tasmad Rudro Bhavad Deva Sa Cha Sarva Gyan Tam Kata.
Narayana is the supreme personality of Godhead, and from him Brahma was born, from whom Shiva was born. Lord Krishna is the source of all generations, and he is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me, no one is above me. There is no supreme controller other than Krishna. One who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master with references from Vedic literature engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man. In comparison to him, all others who do not know Krishna properly are but fools. Only a fool would consider Krishna to be ordinary man. A Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. ठीक है. सो देखो, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, वहाँ पे किसी ने बताया था, विच आई टोटली एग्री, कि जो अलग अलग जगह पे ना, जैसे शिव पुराण में शिव से ही सब कुछ बना है, विष्णु पुराण विष्णु से सब कुछ बना है, शक्ति जो शाक्त है उनके हिसाब से उनसे सब कुछ बना है. तो अलग अलग कल्प जो होते हैं उसमें जो क्रिएटर फोर्स है वो बदल सकता है, या किसी कारणवश, जैसे शिव जी जब थोड़ा सा विष पीने के बाद में परेशानी अवस्था में चले गए थे तो माता ने उनको रक्षा किया था. सो इस तरीके से हर किसी के पास उतनी ही एनर्जी है, चाहे वो माता हो या फिर शिव जी हो या विष्णु हो, कि वो हर एक चीज़ को शुरुआत से शुरू कर सके या पूरा नष्ट कर सके. सो आज के श्लोक से हमने यही जाना कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो विष्णु है, उनसे ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है. वो सब हर एक चीज़ की देख रेख करते हैं और वो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चला रहे हैं. तो आज के लिए यही था. हरे कृष्णा. राधे राधे. जय श्री राम.